Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 15 sampling distribution is under discussion today, lecture number 3, and the topic of important short questions is continue. Now in this lecture students I will discuss important short questions from question 11 to question 15 for sampling distribution chapter 15. Now students kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic of important short questions. The contents of this lecture is based on important short questions. Now, important short questions will be discussed one by one from question 11 to question 15. Now, students, I'm going to start important short questions one by one. Now in short question 11 we have the following information. Sample size 1 and 1 equal to 2 and 2 equal to 2, and the proportions of the first population P1 equal to 2 by 3 and proportions of second population P2 equal to 1 by 2. Find the mean and variance of the sampling distribution of difference between two sample proportions. Now students, here sampling is done with replacement. Before using the sampling distribution properties, we have to find the value of Q1 and Q2. Q1 is the equal to 1 minus P1, and we have the value of P1 equal to 2 by 3. So 1 minus 2 by 3 equal to 1 by 3, और Q2 equal to 1 minus P2, और P2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे 1 by 2 we have given, और 1 minus 1 by 2 answer is 1 by 2. Or now students use the properties of the sampling distribution of the topic difference between two sample proportions. Mean of P1 hat minus P2 hat equal to P1 minus P2. P1 की वैल्यू यूज करेंगे 2 by 3 और 1 by 2 that is the value of P2. इन दोनों का एलसीएम स्टूडेंट्स इसका एलसीएम यूज करें और देन फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करें which is equal to 1 by 6. तो ये आपके पास जो है वो मीन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस P1 hat minus P2 hat की वैल्यू 1 by 6 है. नाउ फॉर द वेरिएंस ऑफ P1 hat minus P2 hat denoted by sigma square P1 hat minus P2 hat equal to P1 Q1 over N1 plus sign P1 P2 Q2 over N2, और देन दोनों को ऐड करने के बाद इसका आंसर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द वैल्यूज ऑफ P1 एंड Q1, P2 एंड Q2. तो स्टूडेंट्स अपनी वैल्यूज को पुट कर दें. P1 2 by 3 एंड Q1 1 by 3, और P2 इक्वल टू 1 by 2 एंड Q2 इक्वल टू 1 by 2, और देन स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में सैंपल साइज N1 2 और N2 इक्वल टू 2. देन स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट पे जो आपके पास आंसर है लेफ्ट पे 2 by 9 over 2, और यहाँ पे 1 by 2 to the 4, 1 by 4 over 2, और 9 आपके पास डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा और कैंसिल होगा 2 से, रिमेनिंग आंसर इज 1 by 9, और 4 to the 8, 1 by 8 इनका एलसीएम यूज करेंगे और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 17 by 72. This is the value of sigma square P1 hat minus P2 hat. So now students, using the properties of the sampling distribution, mean of P1 hat minus P2 hat and sigma square of P1 hat minus P2 hat, calculate the value of mean and variance of the sampling distribution of two sample proportions. Now in question number 12 we have the following information about two populations. First population is population size capital N1 equal to 3, sample size N1 equal to 2, and the proportions of the first population P1 equal to 1 by 2, and for the second population capital N2 population size equal to 3, sample size small n2 equal to 2, and the population proportions of the second population P2 equal to 1 by 3. Find the standard error of P1 hat minus P2 hat, which is also denoted by sigma P1 hat minus P2 hat, if sampling is done without replacement. Now students, first we have to calculate the against population of P1 is Q1, and Q1 equal to 1 minus P1, और P1 की वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे 1 by 2, 1 minus 1 by 2 answer is 1 by 2, and Q2 equal to 1 minus P2, and P2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन से यूज करेंगे 1 by 3, 1 minus 1 by 3 answer is 2 by 3.
Now students, use the properties of the standard error of P1 hat minus P2 hat, which is equal to square root of P1 Q1 over N1 into use FPC factor capital N1 minus N1 over N1 minus 1 plus sign, और for second population की information P2 Q2 over N2 और साथ में यूज करेंगे FPC factor capital N2 minus N2 over N2 minus 1. Now students, put the values of the P1, P2, N1 and small n1. तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यूज यूज करनी है. P1 की वैल्यू 1/2 एंड Q1 1/2 और डिनोमिनेटर में सैंपल साइज N1 इक्वल टू 2 और कैपिटल N1 की वैल्यू पॉपुलेशन साइज 3, सैंपल साइज इज 2, डिनोमिनेटर में 3 minus 1 और सिमिलरली P2 and Q2 have values 1/2 and 2/3 और सैंपल साइज 2 equal to 2 और FPC फैक्टर में वैल्यूज को यूज करें 3 minus 2 over 3 minus 1. देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास फर्स्ट जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/8 इंटू 1/2 FPC फैक्टर की वैल्यू और यहाँ पे 1/3 इंटू 2/3 और डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 1/9 और FPC फैक्टर की वैल्यू 3 minus 2 1 और 3 minus 1 डिनोमिनेटर में 2. इसको सॉल्व करके इसके रूट यूज करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है इसका 0.344 है. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया. सिग्मा P1 hat minus P2 hat, that is the standard error of P1 hat minus P2 hat if sampling is done without replacement. On short question number 13, we have the following information: population size capital N equal to 10, sample size small n equal to 5, and the expected value of S square equal to 80, and where capital S square biased variance summation x minus x bar का whole square over n. If sampling is done with replacement, then find the value of sigma. Now students, here sampling is done with replacement and we use the property of the sampling distribution for E of S square is as mean of S square equal to E of S square equal to n minus 1 over small n sample size into sigma square. तो स्टूडेंट्स हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे फॉर सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट और वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ सिग्मा. तो स्टूडेंट्स E ऑफ S स्क्वायर की वैल्यू हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है विच इज 80. आप 80 को पुट करें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे n सैंपल साइज 5 minus 1 और डिनोमिनेटर में सैंपल साइज 5 पुट करें. सिग्मा स्क्वायर एज इट इज जो है इसको राइट किया जाएगा और देन 5 minus 1 4 डिवाइडेड बाय 5 और 5 जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा 80 से और 4 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर विच इज 100 और स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे इसका स्क्वायर रूट फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड विच इज 10. तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे फॉर मीन ऑफ एस स्क्वायर. कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है. कैपिटल एस स्क्वायर इज द बायस्ड वेरिएंस और बायस्ड वेरिएंस को हम लोग डिवाइड करते हैं सैंपल साइज n पे और डिनोटेड बाय कैपिटल एस स्क्वायर और इसके लिए वेरिफिकेशंस जो है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में E ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू n minus 1 over n into sigma square for sampling with replacement के लिए. तो in this way students you can calculate the value of sigma. Now in the same lines of the question 13 we have the following information: population size capital N equal to 5, sample size n equal to 2, and the expected value of S square equal to 5, and where biased variance S square equal to summation x minus x bar whole square over n. If sampling is done without replacement, find the value of sigma square. Here sampling is done without replacement. Now we're using the property of E of S square is as denoted by mu S square equal to E of S square और इसकी प्रॉपर्टी जो है आपके पास कैपिटल N over n minus 1 और डिनोमिनेटर में n minus 1 यूज करेंगे और इनटू स्मॉल n minus 1 डिवाइडेड बाय n into sigma square. So this is the property of E of S square
when sampling is done without replacement. Now students, using the values E of S square is 5, we have given in following above information. Capital N equal to also 5 और denominator में 5 minus 1. Sample size is 2, 2 minus 1 over 2 और sigma square find करनी है वैल्यू इसकी. इसको हम लोग as it is write करेंगे. और स्टूडेंट्स आप लोगों ने 5 minus 1 4 5 by 4 और 2 minus 1 1 by 2. इसको सॉल्व कर लें. 4 टू ज़ा 8 और 8 जो है वो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से. 5 इंटू 8 और 5 जो है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 और इसको कैंसिल करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास 8 होगा. तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर यूजिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ E of S square. In short question number 15, we have population size capital N equal to 3, sample size 2, and expected value of small s square equal to 9, which is the unbiased variance denoted by small s square, summation x minus x bar ka whole square over n minus 1. If the sampling is done with replacement, find the value of sigma. Here students, sampling is done without replacement. Now we're using the property of for sampling distribution of E of small s square equal to sigma s square. और E of s square की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे 9 और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9 और 9 का रूट ले लेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज 3 और इसको पॉजिटिव यूज करेंगे. सिग्मा इज द इज ऑलवेज take the value positive. So in this way students, you can calculate the value of sigma by using the property of E of S square equal to sigma square for unbiased variance small s square. Today's lecture's important short questions of chapter 15 sampling distribution has been discussed. In this lecture students, I will discuss important short questions using properties of the sampling distribution. इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.